आमर एरिया देख ये जंगल एरिया रोइला आगरी काट मिली रोइला पतर मिली रोइला साग मिली रोइला कि खाई बटा मिसे मिली रोइला जरन रोइला पानी रोइला आमर आगु बहुत भल थिला आम पहाड़ थिला जंगल थिला झरना थिला काठ कंदा चंगा सब फुल हे करथिला हो पहाड़ के मिसा खाटो पतर के खंदा चेरंगा के कजी करी आमर दंदा ही जातुली आगे कंदा नि रोइले देख के लका रानी कंदा जंगल जाई करे मुंडी कंदा नि करे के लका रांदी करे हमर पिला जिले के पसलु पूर्व दिने गछ थिला आज्ञा मझे मझे डंगर पहाड़ माने खाटी करी चाष कलु पड़ू चाष करवा पूर्व आज्ञा गछटा मरीगला मरीगलु एबे चाष बास कले भी आमर किछि हो नै एबे कंपनी जा गुटे आसला आजिकाली एबेटारू देख से माने कणी नहीं जाउछंती टिके टिके पानी कमी आसुछंती टिके चाष भी कमुची सब भी कमी जाउछी चिंता पे आज्ञा एबे हम चाष कले भी चाष हो नै से माइनिंग असला को नदीर पानी नाई ने से गच पतर ठीके बड़ा बड़ा गच थिलाटा से गच हाणी हाणी करी गाड़ी रे भरी करी से आड़े का नहीं जाउछंती हेते बटा गाड़ा आसबाटा नंदास बाटेटा टिके टिके एबे एबे कमी जाउची नदीर पानी ओटी गले रे हमर रोइबा छांथ नाई ने माइनिस झरणा है करी खाली गोलिया पानी आका आसुची लाल पानी पानी भी कमी जाउची आगु तो वर्षा भी बोलतिला पानी भी बोलतिला खरा भी बोलतिला एबे तो खरा हो काट अदा मासे काट देउची पानी काट देउची कोट फसल हे जीवो कोट आमे फाइबू It's a peasant society. They depend mainly on the forest and on cultivation. So we found that over the years the forest land had decreased and they were bringing more and more areas under shifting cultivation, or it is called locally podu cultivation, where people move from one patch to another in every 2 years or 3 years, and then the cycle becomes larger and larger and the production was diminishing. That also leads to climate change. The large scale burning might also affect the environment, and then the soil erosion is also causing a lot of unsustainability. This led to a downward spiral of diminishing returns. Then eventually, where 10 years back people were quite self-reliant, people had not even heard of migrating out. Slowly now, because of the diminishing returns from the land, the migration rate has increased something like 300-400 times. Almost every village has 15-20 people who are migrating out for income. एंती पैसा पत्र टिके अभाव थिला सेटा पे बाहर जाइथिलु असुविधा थिलारु जाइथिलु रायगड़ा कोचिंद्रु एंती केरल बॉम्बे जे हरण हेतिले कि मलर मरितिले आसमाल कासितिले हेति हरण हेतिले. So what could be a more sustainable way of land use where people would get their subsistence food and income as well? We thought that initially plantations in the uplands would help to protect the uplands, and if they got income from the upland plantations, they will naturally cut down on shifting cultivation, and the lowlands they will start farming sustainably. And slowly we developed the idea of this eco village where family farm and commons are developed. आगे माना गाँव राशि करी मीटिंग कलारू ऑफिस रे डाकलारू ऑफिस रे गलु ऑफिस रे मीटिंग बसलु नया रे तुम्हें
कमिटी माँ माने कमिटी गड़बू कि नहीं गड़बू आम समस्ते एकाठू हेबू बोलू Lenkeji kiya ti lenkeji hacha dereci huli hana dera raji pisi raji anda hana dera hai ki wana der hai mihimra ba karti hi pisi pa haki aski mihimra ba karti hurga pa uder de deska pa uder de kuli halji endi agar garmi eli kittar mange होली सब करी एंती करवा सेंती करवा आमर पई से मानकर ए बुद्धि देउचे तांकु न मानले हेबो नहीं बोली कहलारू एटा सी होली सब करी एटा कथा कथा विचार हेई करे आज्ञा एकाटी हेई करी बसली गाँ रे बसी करी एटा एका मानबा बोली आमे बाबी करी आनी लागिया तमें इनती इनती करी आम बुंद लगेले इनती हेब भल ही कर चलब बोली करी बड़ माँ मने आसी करी आमके से फार्मटा देले देला घिनी आमे लिचु गछ आम गछ जाए ताई मने काजू गछ देला घिनी आज्ञा सेटा लगैछु आमे मंजीगुड़ा को आनी देला आगे मन मंजीगुड़ा को आनी देलारू आमे नर्सरी करू नर्सरी रु ए तली बड़लारू आमे आनी करी किस किस को गच मान आमे लगाई देले एबे तो गच कुट नाई ने जंगल तो सरी गला सब लांडा हे गला चाहे चाकुंडा गच बड़ला बोलले कमिटी मा माने मारी करी काट करबे पाई करन मंजी हेला बोलले तेल पेलबू आर आमे बंट करी खाइबू आरे एकाजु गज हेला बोलले तो पल्ला बोलले आमे समस्ते माँ माने एकुटी हेई करी आमर कमिटी माँ माने आमे पैसा बढ़ाइबू बोली माँ माने कहउछन भल हेबा बोली भाबु आज्ञा आमे केन बाटेले 4-8 आना गोटे पैसा पत्थर गोटे पाइमु केन बाटे आमे सुजोग हेमु आमे पिला माइकिना सब बचमु बोली कर सीटा लागছে आमे सुजोग करी एबे करूछु आगे करी नथिनु एबे करूछु Then we moved to, smaller units. We thought of family farms where each farmer is encouraged to design 1 acre of land into partly an income generating area and then partly producing subsistence cropping area. With this, we see that the farmer will get the food crops, so they will have food security and they will get income, and so they will have certain amount of income security. In addition to this, we are also encouraging farmers to go for a more eco-friendly pattern of land use, where the crops are grown, even the annual subsistence crops are grown with minimum tillage, so minimum soil disturbance. So we have already established a practice with the cultivation of pulses like arhar dal, and these crops the farmers have learned to grow very well with minimum soil disturbance, dribbling the seed and not disturbing the soil in any place other than where the seed has been dribbled. Some of them have even been able to grow millets, which is a very good practice actually, and especially in the context of climate change, this is a very good alternative because this kind of minimum soil disturbance ensures that there is a lot of carbon sequestration in the soil. That means the carbon which is released because of deep tillage, ploughing, all that gets conserved as biomass, as humus into the soil, and the soil becomes richer and richer. हटाकू गगड़ा देलु ताकू गाद मारी करी ते आम गछ मन लगाइलु आर सील वाल कलु नागरी लगाइलु ते कदली गछ लगाइलु काजू गछ लगाइलु आगे डंड होथिलु हटा है जगह कला लगु पैसा पत्र असुविधा नै नुन मर्च भी ठीक चलाचल होछु अरे एटा पहाड़ तिलक नै आगे एटा एती बगीचा टिके रखी करी एटी काम करी ए मंडिया कोसला और ए खांदिल खोंदा मन कलाटा तो एती पुनी पर्व चाष करी खाउछन्ते बिया
Akaya ba agara wada macata ba. Age mulla kaya wada machat iling ne machat. Are I kolming hidele motor idang asin komani ke jitinas. Idang to according kudrunga ba haraji machi. Adeng akai aging to hitarna asin damuknas are be kinas ina ka gobi pa ki alung pa ki wanggang parujnas inji hura ileng ki arti kita pare idang katta pa bari berus tapna जो गाँव रे चाष करूछंती आम संगठन आमे जो जिनिस किणबू आमे तो डायरेक्ट तांको पाखरु किणबू जेमती मार्केट रेट अछि से अनुसार आमे किणुछु तांको मध्यस्थित जणे मझिरे रहउथिले सेमानकु बिक्री करिकिना से आ अलगा बड़ पार्टी को बिक्री करबो से अधिका पैसा लाभ रे ये करथिला सेमाने तो बिहन रखी पारबे नै सेतिपाई आमे से बिहन जोगै देबा पाई भी मांडिया धान बीरी एमती डाली जातीय जिनिस कि अलसी सरिष एमती तेल जातीय जिनिस से माने रखी पारबे नै सब बिक्री करि देबे से अनुसार आमे सेटा किणी की एठी आनुछु से तिरपोली पर खेले 8 आना 4 आना लका बिकुचु कि 5 टाका 10 टाका बिकुचु आरे नून मोरी गेनी करी खाउचु हां डबु पैसा से तिरका मो ऐसे के तास करी ए गोछ लगाई करी कूट लगाई करी लिचु गोछ काजू गोछ की कलमी गोछ की काई ना काई चाकोंडा गोछ सेटा लगाई देलु गिने देख सर से मा पैसा अनेक बेडे देउची गिने सेटा नून मोरी गेनी करी खाउचु ଏବେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ତରଫରୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆସିଲାରୁ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଇନକମ୍ କରି ଏବେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଚଲୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଲବା କଥା ଏଇରେ ଗଛ ଗୁଟ ପାଇଲା ପରେ ଏବେ ଚାଷବାସ ମାନ କରୁଛୁ ଆରେ This farming that is being promoted here is completely organic, so we have to say it is organic conservation agriculture. Will slowly spread. We also see farmers are catching on to the idea. They are having mixed cropping and they are integrating permanent crops with annual seasonal crops. So the idea is gradually catching on. This year we have 70 farmers with whom we are working. But in another project we are working with 150 farmers, and if they understand that things need to be integrated and their farm doesn't have to have only income generation plantation or only annual crops like millets and pulses, then they'll start to combine both and they will be able to move towards sustainable agriculture. Buddha cukula ke panna palenge negui ina kapaki bawatabde ina kapa bawatabde lakti ina kapaki watabde negui Agragamee hitar lagi marku ruitapna krai ko karta prikta par marku karta pare ebe marku ruitapna mahka marku ruitapna kaju marku ruitapna lisu marku ruitapna Argoranja marku ruitapna We are hoping that if we start with, helping farmers to have 1 acre of land and then help them develop their commons also in a similar manner with helping the women to, form groups around commons which they protect. There will be an impact on the landscape of the village. Their smaller farms will start changing. Looking at their 1 acre farms, they'll be able to develop further areas. And then looking at their commons, they will also protect other areas of commons. And then because they are able to have enough income security and food security from their farms, they will allow the jungle to regrow in other patches. So there will be a multiple kind of ecosystem rejuvenation where the forests, the agriculture and the income generating horticulture are combined together so that people have a better livelihood. And we are hoping it will eventually become a more integrated system.